जब भी हम जाते हैं कहीं, they keep quiet, they keep mute, like they as if they were not talking about us. हमारी बात नहीं चल रही थी कि एक बार मुंह पे तो बोल के देखो, you won't repeat it again. ऐसे दिन करने हैं कि जब क्लब में बुलाने से पहले भी सोचोगे कि यार इतना बजट है अब. Hey you guys, this is Sammy and I go by the name Sammy on the track boy. So I'm here at Inqalab Decypher to decipher one of my song names, 4x4. 4x4 is all about, the lifestyle people in NCR nowadays, it's basically about cars, okay? Giddy with the boys in a 4x4, note रखें जेब में 2x2. Pull up in the club, कहते oh my god, चढ़ा हूँ मैं stage में, I shoot my shot. So जब हम clubs जाते हैं, ठीक है, we go for performances nowadays. अब मैं, like, for my own self, I'm not talking about other rappers and all. मैं अब clubs वैसे party करने नहीं जाता, खर्चा करने नहीं जाता. I go for my checks, ठीक है. So when we go on the stage for performing our tracks, the reaction of people over there is, oh my god, like first for my own self, when I do speak in Hindi because I'm from West Africa, okay, and I've been in India for like 15 years plus or so. I did my schooling over here and I got perfect in Hindi. I don't, even myself, the most questions I've been hearing from everywhere I go is that aapko Hindi kaise aati hai and all. But the thing is that even myself, I don't even remember when I started speaking fluently. ठीक है, थोड़ा सा सीखा था बचपन में दोस्तों के साथ रह के. Then after that, I started the game. ठीक है, I wanted to do something different because you can see many hundreds of people that can rap in English like me. I've even gotten some reactions like मेरा कोई गाना चल रहा होता है इंस्टा पे, ठीक है, लोग सोच रहे हैं कि लिप सिंक चल रहा है, ठीक है, but I don't know the real part because they have not met me physically. They feel that it's आजकल तो AI वाला सीन में चल रहा है, so they feel कि ये lip sync कर रहा है बंदा, but that's not the fact. The fact is, you can see that I'm speaking in Hindi. दिल्ली के लोंडे लगाते नहीं ब्रेक हैं, दुबई करे लैंड तो हम बन जाते शेक हैं. जाम लगे जितना भी ड्रैग करता रेस है, रोकने से रुक तेरी चढ़ा ऐसा क्रेज है. ठीक है, guys in Delhi now, even in traffic you will see people speeding. ठीक है, that's the youth. I'm just trying to describe the lifestyle in this. ठीक है, आजकल सीन पता ही है आपको क्या सीन है कॉलेज का, यूथ का, कि मतलब गर्मी रहती है सबके खून में आजकल. कोई किसी में मतलब they don't want to take a pause in anything. You see people traveling, not only specifically in Dubai only, see people traveling, and once they travel, the lifestyle changes over there too. When we're speeding on the roads, ठीक है, तो हम रुकते नहीं हैं, we don't stop, no matter what comes on the way. That's the craze in our mind, that's the lifestyle we want to live. मैं Alpha Omega, the first and the last, जब भी घुसते हम क्लब में, the party starts. जब मैं आया मैं इस गेम में, मेरे सर पे है ताज, सुनते ही नाम शॉटेज आ जाती पास. Since I started, I'm the same, and जब तक अभी पता नहीं फ्यूचर में क्या है, I don't know the heights I'm gonna reach. When we enter the club, wherever we enter, no matter where we go, that's when the whole scene starts up. ठीक है, जब भी हम क्लब जाते हैं परफॉर्म करने, इधर इट्स कॉन्सर्ट्स और whatever, we just change the whole scene whenever we turn into the club. I'm not just bragging. Come up someday, you will know what I'm talking about. Since I started like since 6 years ago. The way I started is the same heat I'm going ahead with. ठीक है, it's not that कि obviously I learned a lot of things. बहुत सारे लोग मिले, काफ़ी सारे भाई लोग मिले जो रैप सीन में, जिनकी वजह से साथ में आगे बढ़ते हैं. You can't move ahead alone. You will meet people in the scene. I have a lot of brothers in Noida. Urban Poet is also a good rapper. ठीक है, Flyboy, BBB, Bakshi, and all these boys, when we all met each other and then we started moving ahead in the game. अपने हाथों से तो भर मेरा खाली है ग्लास. I'm top in the game, was the last in the class. स्कूल में सर ने था बोला तुझ में नहीं है कुछ बात, अब मैं डील करता क्लोज, कुछ करता पास. पहले स्कूलों में एग्जाम पास नहीं करते थे, बट अब डील पास कर रहे हैं. For me, I've moved ahead more than I thought. ठीक है, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने सोचा नहीं था कि I'll be because it's not that I've really dropped a lot of songs or maybe I've reached heights, but I know personally the way I started, I didn't expect कि I will be in such level right now. जब मैं स्कूल में था, there's a sir, I won't take his name or whatever.
like he kind of tried to mess me कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है. And it's not that कि मेरे को कुछ उससे कुछ हुआ या कुछ negative point. I just took it a very vibe. But when I was writing this, at that point of time, I had to bring him in that lyrics. अब hit जाते shows and I'm packing the bags. खोलते हम bags जब we counting the lakhs, नाचा कर भी चीखते ये Sammy on the track. अब shows में आते हो, you see a lot of people appreciating the talent I have, appreciating whatever we have done, the songs we have wrote, ठीक है, the vibe we created. But back then, school time में नहीं था ऐसा. School time में हमने खुद नहीं सोचा था ऐसा कि आज ऐसे दिन भी आएंगे, ठीक है, कि shows करने को मिलेंगे. जो लोग TV में दिखते थे उसी stage पे, like I'm a very big fan of King. ठीक है, recently I opened for King, me and my brothers Flyboy, Urban Poet and Weekend. We opened for King, which was never expected, seeing the same stage with such a person who have given a worldwide hit. Even parents, my parents, myself, my dad is a priest, ठीक है, he doesn't believe in, not only believe it, he doesn't even want me in this line. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस लाइन में हिप हॉप, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है. मैं झूठ बोल के जाता था शोज़ पे एंड मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैड टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है. बट नाउ व्हेन द मनी इज कमिंग थ्रू शोज और व्हाटएवर, अब लाइक आई एम टेलिंग यू, इवन माई मॉम डू आस्क मी अब तेरा अगला शो कब है, बिकॉज दैट्स व्हेन आई नो दैट आई एम गोना टेक ओवर दिस सीन फॉर श्योर, ठीक है. देयर वाज अ टाइम लाइक my mom, I had to lie to my parents, झूठ बोलना पड़ता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, कॉलेज का ये है, कॉलेज का वो है, एंड मैं शोज़ में जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, और प्रेशर लगता था कि यार इन चीज़ों के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है. बट आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज ऐसा कोई सीन नहीं है. आज इवन माई मॉम डू आस्क मी अगला शो कब है तेरा, अगले शो पे क्या पहनेगा, मतलब ऑल दोस थिंग्स विच इज़ अ परफेक्ट थिंग फॉर मी बाय दिस टाइम. मैं जैसे जैसे चलता जा रहा हूँ, ठीक है, अपने सीन में आगे बढ़ रहा हूँ, साथ में भाई लोग भी चल रहे हैं साथ में सारे, ठीक है. जस्ट कीप योर आइज ऑन अस, ठीक है. यू नो वॉट वेयर वी आर गोइंग एंड व्हाट्स आवर विजन. वी हैव अ डिफरेंट विजन, ठीक है. हम जहाँ भी जा रहे हैं हम टॉप पे ही मिलेंगे. सो खोलते हम बैग्स, नाउ वी काउंट इन द लैक्स. पहले स्कूल टाइम में बैग खोलते थे तो बुक्स निकलते थे, नाउ हम खोलते हैं बैग्स, अब लैक्स निकलते हैं. When we pull up to the club, is a game over. Munda bad is in the room. आके देख शो पर. All the eyes on me. मुझे देख what's up. I'm speedy with the game जैसे Range Rover. Shout out to Range Rover for sure. That's my favorite car. ठीक है. सबको पता ही है क्या सीन है Range Rover का. मैं रफ्तार से आगे बढ़ा हूँ, ठीक है. And I'm still moving on for sure. And I'm gonna reach the height for sure. Let's go. Come to my shows. Come whenever I'm performing, either it's club, it's a concert or whatever it is, you will know that I'm baddest in the room for sure, because whatever I do my best, ठीक है. There's no competition, my only competition it's me, myself. मैं उन चीज़ों में believe नहीं करता कि like जो रैप आजकल चल रहा है, like I don't कि तू ये है, तू वो है, तेरे से ऊपर हूँ, तेरे से नीचे हूँ. I compete with myself. And as the lifestyle nowadays in NCR, you see a lot of Fortuners, a lot of Thars, a lot of Rubicons and all. So I thought like कुछ अलग होना चाहिए, ऐसा एक track होना चाहिए. So I was just going through some beats, ठीक है, and this beat by Louis Beats on YouTube. But me and Urban were just chilling and at his place, at his set. So मैंने इसको ये hook सुनाया. So he was saying यार भाई ये scene है. उसने भी लिखा verse, मैंने verse लिखा, and then we saw that this is working, so we have to go ahead with this track. Okay, so I'll love to shout out to Urban Poet and shout out to Flyboy and shout out to Bakshi. These guys are lit. Trust me and go ahead and just listen to them. You will thank me later for sure. मतलब इन सब के बिना I can say this proudly that अगर ये साथ नहीं होते ना, I won't be in this level. So thanks to those guys, ठीक है. Much love and thank you so much guys for having me here. Let's go. Sammy on the track, boy. Let's go.